Right, we seem to be live. Oh, yes. Doratune makes animated video as easy as making. Oh, yes. Okay. So, yes, we are live, YouTube live on a Saturday evening. Welcome, everyone. It's an absolute delight to be here back again. And this evening is open for all of you to ask me any question under the roof. जो आपके सवालात हो regarding life, regarding career, regarding communication skills, जो भी आपके सवाल हो, I would try my level best to answer those questions. Is sharing my experience. कुछ कायदे कानून हैं कि जब भी आप कोई सवाल पूछें तो थोड़ा अदब के साथ सवाल पूछें. Choice of words would matter. अन्यथा मुझे आपको बैन करना पड़ेगा. So keep a check on that. So welcome everyone, all those who have joined in at this hour. I hope जो पहले के लाइव सेशंस हैं आपने वो देखे होंगे जहाँ पे I have answered your queries live. जो भी आपके सवाल हैं, I'll try to map it with the real life examples and some practical advice which I have followed in my life, just sharing that. So let's get going. I'm sorry. Oh, yes. Okay, एक सवाल है यहाँ पे आज. Hari Sankar says, first time going to interview, how to get rid of fear. आपने जो ये mention किया ना कि first time going for the interview, how to get rid of the fear. It's quite normal that whenever we do something for the first time, we have this fear. हालांकि जब बात आती है इंटरव्यू की तो हमारा जो माइंड है वो ये भी सोचता है कि व्हाट इफ अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो. द फियर ऑफ रिजेक्शन इज सो स्ट्रॉन्ग कि हमें लगता है कि अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा. हमारे पास एक ही मुंह है, रावण के पास 10 थे, तो वी हैव नो ऑप्शन, हमें यही फेस दिखाना होगा. द पॉइंट इज कि ये चीज़ सोचना कि अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो ये ख्याल कब आएगा. या तो हमारी तैयारी पूरी नहीं है, वी हैवंट प्रिपेयर्ड रियली हार्ड, और वी थिंक कि अरे क्या होगा अगर ये सिलेक्ट नहीं हुआ, एंड वी जस्ट थिंक कि लास्ट टाइम रिजेक्ट हो गया था, एंड द माइंड सेट, द नेगेटिव माइंड सेट, दैट प्लेज अ क्रिटिकल रोल वे वी फील दैट मुझसे हो नहीं पाएगा. दैट कुड बी अ रीज़न. Now let's do one thing, that first of all, if you have time, then fix your routine. I mean, before the interview, study about the organization. That's one thing which people don't do, as in studying about the organization, about their culture. Moreover, also know about the job description. बहुत सारी websites हैं जैसे कि Glassdoor, like Quora, LinkedIn. यहाँ पे जाके check out the kind of questions that are being asked for that particular job role. जानिए उस कंपनी के बारे में कि what makes that company stand apart from the others. Example के लिए जब आपसे कहते हैं कि why do you plan to work with us, or what makes you choose this company over the others, तो हम लोग एक वही regular answer देते हैं. But the moment you customize your answer as per the job description, as per the company, your answer becomes a lot better. So ये बात है preparation की. Whenever you are prepared that what you have to say, you will have less of fear. You will be more confident कि हाँ मुझे गाड़ी चलानी आती है because मैंने गाड़ी पहले चला रखी है. जब पहली बार एक नई गाड़ी चलाओगे तो एक हल्का सा hesitation, friction तो feel होना बहुत बहुत normal सी बात है. Getting it? So having said this, practice is one thing which you can do over a period of time. Secondly, अगर आपके पास समय नहीं है, suppose कल ही आपका इंटरव्यू है, तो what you can do? You can just go through the FAQs, frequently asked
questions that are around that job role, उसके बारे में थोड़ा सा जानिए कि क्या क्या सवाल पूछे गए एंड गिव अ थॉट कि अगर आपको किसी को हायर करना होता तो आप कैसे शख्स को हायर करते हैं? जो शख्स बस रट के आंसर आ गया उसको, या फिर समवन who connects with the culture of the organization and also with the skill set, right? समय बहुत कम है आपके पास, so अभी के लिए instead of thinking about what if I don't get it, think about what if you get it. Have that excitement, have that adrenaline gush कि यार कितना मजा आएगा. Life would take a step forward and you'll feel so happy about yourself. उस feeling को अपने अंदर लेके आइएगा कि वो interview सिर्फ एक medium है जहाँ पे they get to know you and you get to know them. Do not take it as a platform where they are trying to judge you. कहीं ना कहीं yes, they are trying to come to a decision. एक सिंपल सी बात है, आपको डिसाइड करना है, उनको डिसाइड करना है कि क्या आपके साथ वो आगे जाए या ना जाए. It's a conversation. It's simply a conversation where you are showcasing your skill sets, your mindset, and they are just trying to fit in that. Yeah, क्या ये शख्स सही बैठता है हमारे जॉब के हिसाब से नहीं? I hope this gives a fair idea to everyone who is preparing for the interview. Yes or no? Does it make sense? Give me a yes in the comment section. All right. There's one more question that is being asked, that how to speak without flaw, sir? Speaking without flaw. Kahin na kahin, this is highly aspirational. Right now, also, as I'm talking to you, I may not be perfect. And that is the beauty of it. That is the beauty of it, that you accept it, that I would make mistakes and that would make me human. For example, अभी आपसे बात करते करते अगर मुझे खांसी आ जाए ये नकली था, असली नहीं था, तो आई शुड नॉट फील अरे यार क्या हो गया, मतलब मुझे खांसी कैसे आ सकती है एंड लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में. ये बहुत एक बेसिक सी बात थी. ऐसे ही कई बार हम जब बोल रहे होते हैं हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं, या फिर हम लोग थोड़ा सा हेसिटेशन करने लग जाते हैं. तो ये एक नॉर्मल है, इसको अपने ऊपर इतने मत लो कि अरे मैं तो किसी लायक नहीं हूँ एंड मैं कहीं स्टैंड नहीं करता. डोंट गेट दिस थॉट इनटू योर माइंड. गेटिंग इट? रही बात अब क्या कर सकते हैं, पहली चीज़ हमने खुद को एक्सेप्ट किया कि ठीक है जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, अपनी जर्नी को देखा कि हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ तक पहुँच चुके हैं. दैट विल गिव यू द करेज. आप खुद को कंपेयर करिए कि कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले आपको इतना डर था, आपका शायद ये पहला मौका होगा कि आप उस स्टेज पर, उस डायस पर हैं खड़े हुए लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो आपने अभी तक सिर्फ सोचा था. Your thought became an action. Feel happy about it. Getting it? Feel happy about this thing that at least you took a step further. Certainly, जो आपकी next speech होगी वो और better होगी. This is how I have improved. मुझे सपने में भी नहीं था ऐसा पता कि मैं किस दिन इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके लोगों से बात करूँगा, उन्हें ट्रेन करूँगा, उन्हें कोच करूँगा. I never thought being on TEDx was a dream for me. It happened. एक शख्स जिसके लिए बोलना was a big challenge. Imagine him winning Toastmasters. मेरे लिए ख्वाब था, लेकिन वो ख्वाब मुकम्मल कब हो पाया? जब रोज़ाना यही चीज़ थी, ठीक है आज कल से बेहतर किया, कल आज से बेहतर करेंगे. गेटिंग इट? सो ये जो परसूट ऑफ परफेक्शनिज्म है ना, कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट बोलना है, ये आपको कहीं लेके नहीं जाएगा. मैक्सिमम पीपल दे गिव अप, दे डोंट इवन ट्राई. दे थिंक कि नहीं यार मुझे अपना परफेक्ट वीडियो चाहिए, परफेक्ट स्पीच चाहिए, तभी जाके मैं आगे आके लोगों के सामने बोलूँगा. नहीं, इट्स ह्यूमन. मेक सेंस? All right.
I hope this makes sense to you. If it makes sense to you, give me a that. Yes, absolutely, it makes sense to me, Divas. Oh, right, the next one. Hi, sir. Today I was asked to give a demo on coming Monday for the lecture post in my college itself, as I'm gonna complete my master's in few days. How to take up a demo for first time? Okay, if you are planning to be a faculty at a college, in your college, yeah, this is what I read from your question, that you want to apply for the post of a lecturer in your college, and the question is that, okay, you're completing your master's, so okay, after your master's degree you plan to join the college as a lecturer and you want to take a demo for the first time. But one advice for you, go with the intent of serving. ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब जा रहे हो उस डेमो के लिए, यस आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत मैटर करेगा. हाउएवर द इंटेंट, आप किस इंटेंट से वहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं, serving. You are just serving the entire classroom. Just imagine that you're there, there are maybe 40, 50 candidates sitting in front of you. You're not just trying to impress them. वो एक पार्ट है, वो सिर्फ एक बाहरी पार्ट है. The second and the most crucial part which will sustain, अगर आपका डेमो लेक्चर करीब आधे घंटे का है या फिर एक घंटे का है, एक घंटे में लोग सेंस कर जाएंगे कि आपकी इंटेंशन उनको सर्व करने की है या नहीं. क्या आपको जो भी आता है ना उस दिन दिल से आंसर करो. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एनर्जी. आई एम अ बिग फैन ऑफ एनर्जी. सो अगर आप एक सेशन ले रहे हो, उस आधे एक घंटे में एवरी वन शुड बी ग्लूड टू वॉट यू डू, with your hands, with your eyes, with your body language, and the way you connect with people. Apni energy ko keep it over here. Engage with everyone. It should not be just a one-way communication. It should be rather a two-way communication. I often see that in case of a demo session, people just stand behind the so-called dais or podium, and from there they will give a lecture. No, you need to connect with the audience. So go in between the audience, connect with them, ask them questions which are relevant to them, talk in their language. I mean, if you are addressing the young grads, check out the generation Gen Z. If it is Gen Z, then talk in their language. You cannot act like a senior old professor who says, you know what, listen to me, I know it all. No. Today, the generation, I mean, even you know it because of the social media. Getting it? So talk in their language, that's one great way. And keep the energy level super high. And yes, as I said initially, serve. Yeah, that is the intent. The intent is to serve, not to teach. Your intent is just to serve them, help them understand that complex thing which was taught to them all this while in their school days or college days. If you can simplify that complex question and make it understandable for your students, you're a great teacher. At least that's what I got to know from my students who said, Divas, thank you so much for simplifying and making it easy for us to improve our skills of communication. This will work for you. All right. So in one of your latest video, you mentioned that you're a night owl. Yes, a night owl. May I know some tips on how to become a night owl, because at night there is no disturbance for studies. Vidya, I would not recommend you to be a night owl. Any day, morning hours are better. Yes, I do talk about the energy levels, that whenever your energy level is super high, you should work as per that time. However, research says that morning hours are way better
than the late night hours. The entire biological clock gets affected. This is what even I witnessed in the last few months and years. If you want a disturbance free environment, waking up at 4 in the morning is a good time. No disturbance at all. No disturbance at all. I thought that I would stay awake the whole night, and then the morning hours get a bit stretched out. If you don't want that for yourself, then I would say that find out those hours where you are in the peak state. Yes. I always thought that morning will be difficult for me because whenever I tried, I just woke up and opened my notebook back in my school days and then start studying. And I thought that, I don't get that focus right in the morning. But then when I started doing some yoga or any kind of fitness or followed a fitness regime, just imagine, right? आप सुबह उठ रहे हो and अगले आधे घंटे के लिए before you get to your studies or stuff, just do some workout. Bring your body in that state of motion that your emotions are under control. Getting it? Get your body in the state of motion so that your emotions come in your state of control, and that's really important. After those like moves, the shaking your body after half an hour or so, you'll be so much energetic that that energy can be used for your studies. And yes, if you spend your time from 4 in the morning till what, 7 or 6, those 2-3 hours are a good time to invest in a disturbance free environment. रात को अगर जागना है तो कॉफ़ी का सहारा ले सकते हो अगर लगता है तो. I think to become a night owl, it is not like you have to do something to become a night owl. It's just like which hour suits you more than the other. Energy state किस समय ज़्यादा है किस समय नहीं, that's the only thing. Okay? All right. Awesome. I cannot speak confidently in front of strangers and I always make mistakes while talking. I stutter a lot, but I'm alone. I speak really well. I don't know what to do. That's quite a valid point that you made over here, that when we talk to ourselves, for example, right now in my home studio, there is no one and I can talk comfortably. However, if I have a person in front of me, then somewhere I feel, oh my God, this person is judging me, this person is observing my hand movements, my gestures, and everything, that he is evaluating my words as well. ऐसा लगता है हम लोगों को that I'm being observed every single time. ऐसा लगता है आप लोगों को? Supposedly, you had to go on Zoom live sessions, and if your trainer, your teacher, your manager said कि आपको camera on करना है, so did you feel a bit difficult? Let me know in the comment section that did you feel a bit of a challenge when you were supposed to go live on the camera and there were many people on Zoom or any other platform, maybe Google Meet or so. Did you face that challenge? Yes. Now, why it happens? Because you know that constantly through this one tiny hole called as camera, people are looking at you. Your every move. मेरा भी हाथ कहाँ जा रहा है, नाक में जा रहा है, नाक के ऊपर जा रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, and you feel, oh my God, सब लोग देख रहे हैं मुझे, सब लोग देख रहे हैं मुझे. Getting it? And that makes you feel uncomfortable. So क्या कर सकते हैं? हम लोग अपने कोर्स में यही करते हैं. We have a private Facebook group जहाँ पे रोज़ाना we post a new topic, and the students of mine, the working professionals and the college students and school students and the other people from across the country, they record themselves using their smartphone, and that makes a big difference.
If you start recording yourself, start going live on Instagram, YouTube, it will give you a lot of courage. Start doing Instagram lives. It will give you a lot of comfort to talk to people. At least in that virtual mode, you'll be more comfortable in making mistakes, in facing the camera, observing your voice, expressions, and everything. Once you get comfortable with that, go and meet people. Yes, do that. All right, the next question. People say that how to improve, how to speak in English, how to improve English fluency, how to improve English, sir, how to speak in English. Okay, a lot of questions around how to speak in English. Now, very simple thing to understand is that English being a language, we pick it up. We pick it up by what we hear around us. Tell me one thing. Whichever place you belong to, maybe in India or outside India, how did you pick up the language that you speak at your home, your mother tongue? When you were 2 years old, 3 years old, do you remember? You did not go to a school, you did not refer any book, but how did you learn those words? How did you learn how to pronounce those words? Any idea? Your ears. You could not read. You did not know that A is like this, or B is like this, or C is like this. You did not know when you were 2 or 3 years old. Yes, you were learning. You were learning. However, you're able to use or pronounce or speak those words. Why? Because you heard them from your parents, from your people who are around you. Yes? Yes or no? If you're watching this, give me a heads up that yes, it makes absolute sense, Devas, that we witnessed that. Yes. Now, if our ears or our entire system is designed in this manner that whatever we listen to, we kind of internalize, we kind of make it as you know our core DNA. हो क्या रहा है अल्टीमेटली? जो भी हम सुन रहे हैं, किसी के घर में अगर गाली दी जाती है तो वो गाली सीख जाता है. किसी के घर में जिस तरीके से बोला जाता है वो वही तरीका अपना लेता है सबकॉन्शियसली. जो सुन रहे हैं वही आप वैसे ही आप बोल रहे हैं. सो क्या सीखें हम लोग इससे कि आज की डेट में अगर आपको अपनी अंग्रेज़ी इम्प्रूव करनी है, देन स्टार्ट लिसनिंग टू पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश. आज आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास वो लोग नहीं हैं, हमारे पास बात करने के लिए कोई नहीं है. आजकल सोशल मीडिया की वजह से सब कुछ इज़ इंटरकनेक्टेड. गेटिंग इट? सो व्हेन यू आर there watching videos, I know that YouTube offers a lot of masala, a lot of entertainment. However, YouTube also offers quality content which makes you productive, which makes you grow in life. I have a lot of videos on that. Check it out. Check it out कि किस तरीके से शब्दों का उच्चारण, how do you pronounce certain words, expression. Just observe कि वो कैसे बोल रहा है, मुझे भी ऐसा बोलना है. That will give you a lot of clarity and you'll be able to form the same sentences. Just try to pick up the words, pick up the phrases, pick up the sentences, pick up the opening lines, pick up the gestures, pick up the expressions and try to mirror it. Try to replicate it. उसे कॉपी करना शुरू करें. उस पूरी जर्नी में आप अपने लिए अपना स्टाइल ढूंढ लेंगे. That's one golden I want to give you. Not those regular tips कि रोज इतने वर्ड याद करो और फिर लोगों से बात करो. That's a bit of a challenge. The focus is conversational English. मेरा focus ये नहीं है कि मैं
ग्रामेटिकली कितना करेक्ट बोल रहा हूँ. माई पॉइंट इज दैट कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश क्या मेरी सही जा रही है, नहीं जा रही, क्या मुझे लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, दैट्स इनफ. आई होप दैट मेक्स सेंस टू एवरीवन. All right. Such a tremendous live video and helpful. Awesome. Happy to help you, Sonia. Okay. The next question out here is that, hi, sir, when we practice alone, our pitch is different, and in front of anyone, it's different. So my alone practice and thinking in English is not working. Suggest some coordination techniques. Okay, so you want to say that when you practice alone, your pitch is different, and when you speak in front of someone else, your speech is a bit different, and you have a challenge with speaking in English. Quite a genuine concern, Didi Sharma. Think about it. Right now, I'm talking to all of you. It might be one-way communication verbally, but from the other side, it's coming out in the written form. So I know that there are people who are listening to me. For example, if I say, are you enjoying this live session? Let me know in the comment section that, are you enjoying it? Give me some kind of response which makes me realize that, yes, I am learning, I am enjoying. Go ahead. Now, based upon your responses, I would change my way of speaking. For example, I sense that, hey, people are not enjoying it. I would try something else. And if I sense that, hey, people are enjoying it, they are like having fun. So कहीं ना कहीं मुझे एक इनपुट मिल जाता है. तो कहने का मतलब क्या है कि आज की डेट में आप सोशल मीडिया के थ्रू आपको लोग क्या फीडबैक दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उसके बेस पे यू कैन ऑलवेज चेंज योर स्टाइल. लाइव करेंगे तो आपको लाइव फीडबैक मिलेगा. अगर आप रिकॉर्ड करके अपलोड करके फीडबैक लेते हैं, इवन दैट हेल्प्स प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वन. ऐसा ही हम लोग करते हैं. हमारे कोर्स में जो कम्युनिटी है, जो ग्रुप है, जहाँ पे जब लोग वीडियोस अपलोड करते हैं, उनको हम लोग फीडबैक देते हैं कि आप फीडबैक लो, इस पे वर्क करो, एंड जो अपनी नेक्स्ट वीडियो है उसको और बेटर करो. गेटिंग इट? सो जो चैलेंज है ना कि अकेले तो मैं ऐसे साउंड करता हूँ, औरों के सामने ऐसे साउंड करता हूँ, बिकॉज आप अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हो वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है. आपने खुद के साथ प्रैक्टिस करी एंड दैट वेपराइज, दैट डिसअपियर्स. बट जैसे उसको आप रिकॉर्ड करते हो, अपलोड करते हो, उन लोगों से शेयर करते हो जो आपको सुन के फीडबैक देते हैं, दैट बिकम्स अ लर्निंग कर्व. मेक सेंस? All right. Hi, Divas. Share some tips to improve presentation skills. Pratibha, I have this feeling that I did cover up this in one of my YouTube videos. Do explore. However, I'll give you a few tips around presentation skills, that what a person should do and what he should not do. Maximum times when people are presenting, they read from the slides. No! Don't do that. Don't do that. Because आप जब स्लाइड से पढ़कर बोलते हैं, then कहीं ना कहीं you miss that connect. You miss that connect. The audience wants to listen to you. And if you are busy reading from the slide, वो तो वो लोग भी पढ़ लेंगे. फिर आपका काम क्या है? If your slide has a lot of content, lot of text, then the audience would not listen to you. In fact, आपकी स्लाइड पे ही लोगों का फोकस रहेगा, वो खुद पढ़ लेंगे, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं. You need not read it. The audience would read it all by themselves. That's one blunder which people do.
So have minimal content on your slide. I always recommend having high definition images, having bold text, having contrasting text, which makes it easy for people to read and make sense out of what you're trying to present. For every slide that you present, have at least 3 points in your mind that, okay, what you're trying to share. Have 3 points. In some cases, maybe less than three, that's okay. But have your 3 points. Also, if you can connect with a story, maybe you open a slide and you just share a story. For example, if I open a slide with this background and I start that, I always looked for motivation, something that resonates with me. And these 4 words are my guiding force. Stay awesome, stay productive. Just like building it up in the like real time out here. तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि आप जब एक स्लाइड से शुरू करते हैं, do not just go with hello friends, my name is Divas and today I'll present about this and this. No. Try to grab the attention of the audience in the first few seconds and ask them good questions so that you're able to connect with them. There are various other ways to open your speech, and yeah, try to engage with the audience. Don't just make it a one way, make it conversational. That can help you. Okay, Janardhan, sir, how to take first step towards our goal and how to maintain consistency after taking the first step? Janardhan, when would we take the first step? When our why is clear, that why do I want to do this? Why do I want to do this? Why do I want to go there? It's simple, right? हमने बात करी आज रिकॉर्डिंग ऑफ वीडियोस टू इम्प्रूव योर स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब पहली वीडियो रिकॉर्ड क्यों करोगे? Because you have a goal that I want to speak effectively. You can visualize yourself that yes, I want to be there. I want to be heard. So visualize that yes, I want to be there. Be very clear that why do you want this, right? उसके बाद जो पहला कदम है वो आप लोगे. एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ आपको मैं कि जब आप सोचते हो अपने स्कूल में कि मुझे आईआईटी में जाना है या एनी अदर ग्रेट कॉलेज, first of all you imagine that how life would be, what would happen over there, how would it feel when you will crack any exam. Getting it? That feeling gives you so much of excitement that मुझे करना है ये चीज़, and that keeps you going. Observe किया, that excitement that I want to go to Goa, Ladakh and Switzerland or whichever place. That thought, that imagination makes you feel so good about yourself that you're like, yeah, chalo, let's explore the place, let's go ahead and then book the ticket, and all that stuff happens. So first thing is, be clear. Imagine yourself being there. जो आपका गोल आपने सेट किया है, उस गोल को महसूस करिए कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है. दैट फीलिंग, अगर आपके रोंगटे वो खड़े हो जाते हैं ना कि यार इट्स वर्थ इट, आई मस्ट डू इट, देन दैट फर्स्ट स्टेप विल बी इजी फॉर यू. अब आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया, अब आप आगे बढ़ गए. रास्ते में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे. यू विल फील अरे यार मैंने रास्ता क्यों पिकअप कर लिया, तो बहुत टफ रास्ता है. आई थिंक मैंने जल्दबाजी में ये चीज़ डिसाइड कर ली. आस्क योरसेल्फ कि क्या वो डिसीजन आपको रिग्रेट हो रहा है उस डिसीजन पे जस्ट बिकॉज इट इज़ टफ, और genuinely you did not get the right guidance and you can do something about it.
मेक सेंस। कई बार हम सोचते हैं कि अगर कोई रास्ता टफ है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है, तो वी जस्ट चक इट ऑफ एंड से चलो यार, ये काम नहीं कर रहा है, राइट, ये मेरे लिए सही नहीं है। तो आपको बार बार ये याद दिलाना है कि आप कोई भी पाथ लो, ये बात समझ लेना, जो भी इसको सुन रहा है आज, यू पिक अप एनी पाथ विच इज़ कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल, मेहनत दोनों जगह करनी पड़ेगी इफ़ यू रियली वांट टू गो अप द लैडर। अगर आपको यही रहना है तो ज़िंदगी बहुत आसान है, सच कह रहा हूँ, ज़िंदगी बहुत आसान है अगर आपको यहीं रहना है। कंफर्ट जोन में रहना बहुत कंफर्टेबल है, बट वहाँ पे फिर ग्रोथ नहीं होती। बट इफ़ यू रियली वांट टू गो अप द लैडर, बी बी इट इन योर कन्वेंशनल करियर चॉइसेस, या फिर इफ़ यू ट्राई समथिंग अनकन्वेंशनल, दोनों जगह कंपटीशन है, दोनों जगह रास्ता टफ है। गेटिंग इट? सो व्हेन यू रियलाइज इट कि यार हार्ड वर्क तो करना ही है, वो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हम कहते हैं कई बार कि हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि मुझे अगर सपोज़ कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना है या कुछ भी चीज़ चूज़ करनी है, तो व्हाट आई सर्च कि ऑल्टरनेटिव फॉर दिस करते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो यहाँ पे आपका हार्ड वर्क, आपका कंसिस्टेंसी, वो एक ऐसी चीज़, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि चलो ये ट्राई कर लेते हैं। ब्राउज़र्स होते हैं हमारे पास कि मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, सफारी है, तीनों से सेम काम हो जाएगा। बट ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये चेंज नहीं होंगी। So when you know it that consistency and your hard work are two things which would stay as a constant. So even though in between you feel like अरे यार कुछ results नहीं आ रहे, it's a daily progress. It's a daily progress. You would get results because you believe in the process. अगर आपका बिलीफ ही नहीं है प्रोसेस में, इफ यू एक्सपेक्टिंग कि बस रातों रात कुछ बदल जाए और मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ, वो जॉब पा लूँ, वो स्पीकर बन जाऊँ अच्छा वाला, बिलीव इन द प्रोसेस, इट मेक्स सेंस टू यू। All right. So if someone insults you or making fun of you, how to handle that situation? आयुष, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि लोग आपकी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं। कहीं ना कहीं या तो उनको तसल्ली मिलती है, उन लोगों को जो उनकी खुजली होती है ना, कई बार लोगों को पीपल हैव द हैबिट ऑफ लाइक पोकिंग देयर नोज अननेसेसरली, और उनको उससे बहुत शांति मिलती है। देयर आर सम पीपल जिनका दिन गुजरता नहीं है जब तक वो किसी की बेइज्जती ना कर दें, एंड देन दे फील कि हाँ अच्छा हो गया, मैंने उसकी बेइज्जती कर दी, एंड नाउ आई फील बेटर। उन लोगों के लिए सिर्फ दुआ करो कि हे भगवान, थोड़ा सा इनको ब्लेस कर दो सो दैट दे कैन लीव balanced life. Just think about it. How would they feel? Think about it. How would they feel? उनका उनकी insecurity कितनी ज़्यादा होगी, right? So if next time someone insults you, do not insult that person back. वो मत करना। दूसरा शख्स इमोशनली बहुत वीक है, इसीलिए आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है। अगर आप भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करोगे, the purpose is defeated. The purpose is defeated if you reciprocate in a similar manner. तो शांत रहिए, act like a sponge, होगा ना sponge, absorb करिए, ऑब्जर्व करिए कि ये शख्स ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी क्या मजबूरी है, वो कितना रेस्टलेस सा फील कर रहा है, उसकी क्या कंसर्न है, वो क्या चाह रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। और शांत होकर से पूछिए कि what makes you say those words? I'm really curious to know कि ऐसा क्यों बोला यार। Not like ऐसा क्यों बोला तूने। Some people have this, you know, उनमें अलग ही ईगो आ जाती है कि ओए कैसे बोला, ए कैसे बोला। So don't let that happen to you. Be calm. जो शख्स आपसे ऐसे बोल रहा है, सोचे कि वो किस जगह से आ रहा है, किस परिवार से आ रहा है, वो चीज़ मैटर करती है। सो उनके लिए दुआ करिए, विल बी ऑल फाइन, ठीक है। ऑल राइट,
How to present yourself in front of others so that you will get married and understand other real true person. Okay, interesting. How to present yourself in front of others so that you will get married. कि मतलब वो मुझसे शादी कर ले तो मैं कैसे अपने आप को प्रेजेंट करूं. पारुल, अगर आप इस तरीके से खुद को प्रेजेंट करेंगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो बंदा मुझसे इम्प्रेस हो जाए, हो सकता है कि उस 5 मिनट के अंदर वो बोले कि यार पारुल तुम ही हो मेरे ख्वाबों की मलिका. He might think that way. However, when he realizes it कि वो तो ख्वाब था, हकीकत अलग है कुछ, तो रिलेशनशिप चल नहीं पाएगी. Getting it? The person should marry you for who you are, not for who you pretend to be. ये बात समझना, ये बात सभी के लिए है. All those who fall in love, कि Divas, I'm in love. So I just like that girl and ये बरसाती वाला प्यार बहुत आसानी से हो जाता है. आज हम बात कहीं से कहीं जा रहे हैं, बट मज़ा आ रहा है. So understand that in case of dating or in case of a serious relationship, you need to be yourself. And if the other person cannot accept you being who you are, then that relationship would not sustain. वो सिर्फ एक momentary pleasure है कि I need to please the person, I need to make the person feel like, you know what, I'm just meant for you and you are just meant for me, and we are just getting cozy with each other, and like we have the violin and the pink and the red, very momentary feeling. I hope this makes sense to you. So you have to be yourself and you have to speak your heart out. Let's see, this is who I am. पहले खुद को जानिए कि आपकी क्या कमियां हैं, आप क्या चीज़ छुपाना चाहते हैं और क्यों छुपाना चाहते हैं. अगर वो शख्स आपकी वीकनेसेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो वो रिलेशनशिप नहीं चल पाएगी. मेक सेंस? All right, the next question that comes from ask nice interesting questions ki maza hai. Don't you fear your creator? Have you ever tried to find your creator? Well, I just know that I am a creation. Who created me? I do not know. I don't know. I was just dropped from the heaven or from the hell. मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है. होता ना कि जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर कहाँ पे हुआ था, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, होता है. आई डू नॉट नो कि एग्जैक्टली कहाँ से टपका मैं. पता है आपको, आप कहाँ से टपके? नहीं ना? अगर पता हो तो बताना. रही बात डोंट यू फियर योर क्रिएटर, डरना क्यों है? जिन्होंने क्रिएट किया सोच समझ के क्रिएट किया होगा ना. एंड आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई एम सपोज टू डू. जब ये जो एक डर वाली बात है ना कि उससे डरो, क्यों? उसमें विश्वास करो. Fear and faith are two different words, folks. This is for everyone out here who's watching me live right as of now, or even the video. The two words, fear and faith. Fear and faith. Majority of us live by fear. 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 डर से क्यों जीना यार? अगर उसमें भरोसा है, if you believe in that power which created you, would life be different for you? You know it. I'll take this risk. I'll try it out. I'll do it. Let me try it out. Let me try it out. मैं कर सकता हूँ क्योंकि I have believed that there is a force. There is a force that is supporting me. Make sense? So डरिए मत. Believe करिए.
अगला सवाल, सर क्लोथिंग ड्रेसिंग सेंस मैटर्स इन कम्युनिकेशन स्किल्स। रोहित, अगर मैं इस समय टी शर्ट में ना बैठूं एंड मैं कुछ और पहन लूँ इस समय, तो क्या मैं अच्छा साउंड करूँगा? लेट मी नो इफ आई change my clothes, would my skills of like communication would change? ये है कि हाँ, लोगों के सामने आप जब सूट बूट पहन के आते हैं तो एक अलग इम्प्रेशन पड़ जाता है पहले कुछ सेकंड्स में, वो शायद कुछ मिनटों तक रहे, बट जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हैं तो वो सूट एक तरफ हो जाता है और आप एक तरफ हो जाते हैं. So spend more energy. I've seen a lot of people doing this on YouTube or any other platform where they think कि बस मुझे एक इतना इतना स्मार्ट लगना है ना, मतलब कि लड़कियां इम्प्रेस हो जाए. आप मॉडलिंग नहीं कर रहे हो दोस्त, यू आर शेयरिंग विजडम. आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से लोगों को एक मैसेज पहुंचा रहे हो. मेक सेंस? All right, the next one. How to handle awkward situations, especially for introvert. Introverts के लिए awkward situation क्या होती है? जब उन्हें कहा जाए कि आप आगे आइए और बोलिए. And introvert is like, oh my god, ये क्या हो गया? मैं तो कभी आगे आया ही नहीं और मुझे बोला जा रहा है कि आपको आगे आना है और बोलना है. कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? पहली बात, उसको आपने मन में ऑकवर्ड बनाया, वो ऑकवर्ड नहीं है. करेंगे यू थिंक अरे नहीं नहीं नहीं, वो मेरे कंफर्ट जोन से बाहर जो भी होगा आपके लिए दैट इज़ ऑकवर्ड. अगर मुझे आप इससे बोलें कि दिवास यू हैव टू डांस, आई थिंक हे दिस इज़ ऑकवर्ड बिकॉज ये लाइव सेशन है जहाँ मुझे विजडम शेयर करना है, लोगों के जो सवाल है उनका जवाब देना है, एंड मुझसे कह रहे हैं कि आप डांस करो, तो जायज़ नहीं है. दैट माइट बी ऑकवर्ड. लेकिन if you want, we can do that. Yay! Getting it? I might be looking at crazy as of now, but the point is to help you understand that be comfortable in what you do. I think मैं शायद अभी I was riding a horse. मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्लिक कर क्या रहा था. So the point is that आपको awkward feel होगा, but you should be like कि ठीक है, अगर वो उस प्लेटफॉर्म के लिए ऑकवर्ड है, उस सिचुएशन के लिए अगर ऑकवर्ड है, तो आप कह सकते हैं कि यार ये सब मैं कर सकता हूँ बट अभी नहीं. दैट मच कॉन्फिडेंस यू शुड हैव, राइट? कि ठीक है, अगर लोग मुझे ऐसा करने से सोचते हैं कि ये कैसा आदमी है, क्या कर रहा है, ये तो लाइव सेशन है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, दैट्स ओके. दैट डज नॉट डिफाइन मी. गेटिंग इट? सेल्फ एक्सेप्टेंस. जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं पूरी तरीके से, तो यू आर सो कॉन्फिडेंट. मेक सेंस? सो आपको कभी वो ऑकवर्ड वाली फीलिंग नहीं आएगी. आप चाहे इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, कोई भी आपको सिचुएशन मिलती है, टेक एज एन अपॉर्चुनिटी कि वो एक सिचुएशन नहीं है कि जहाँ मैं क्या करूँगा. इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ग्रैब इट कि क्या मैंने ऐसा पहली बार किया है, या क्या मैंने ऐसा पहले कभी किया है, नहीं किया है. लेट्स डू इट, मज़ा आएगा. दैट कैन बी ग्रेट फीलिंग. ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस इवनिंग. Sir, I have been watching you for a few days and I realize I'm changing, sir. I want to be a great speaker so that I can express and discover myself and help others to discover themselves. Speaker कैसे बनूं? बोल बोल के और खुद को ट्रेन करके. एक और चीज़ है, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको राइट गाइडेंस भी चाहिए. इट्स समथिंग लाइक, अगर मैं एक दीवार को पुश करता रहूं, सपोज ये दीवार है, मैं इसे पुश कर रहा हूं, तो वो दीवार मूव ही नहीं हो पाएगी ना. है ना? तो मुझे एफर्ट उस दिशा में लगाने हैं जहाँ पे रिजल्ट मिले. तो उसके लिए एक राइट गाइडेंस, एक राइट कोचिंग और ट्रेनिंग, वट एवर, जो आपको बता सके कि आपको ये चीज़ें करनी है. दैट इज़ वन थिंग.
Once you get the guidance, उसके बाद your consistency will make a difference. ऐसे हम लोग कर रहे हैं ट्राइब में, I mean in that like group of hours. गाइडेंस वाला काम मेरा रहता है, फीडबैक वाला काम रहता है, लेकिन रिकॉर्डिंग करने का काम सभी ग्रुप मेंबर्स का रहता है. सो वो लोग कंसिस्टेंट हैं, इसलिए उनको रिजल्ट मिल रहा है. So the same advice for you also. If you want to become a great speaker, first of all, improve your skills of communication. Start recording yourself. Showcase to the world what you are capable of, and the world will feed you back. अगर आप एक अच्छे स्पीकर होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लोग नोटिस करेंगे, and they will share things. Make sense? So on this note, we would end this YouTube live. If you loved it, do share it with your friends and family members. They must get answers to their queries as well. I hope this Q&A helps. So it feels great. It feels great to be here, like serving all of you. Thank you so much for being a part of this live session. If you loved it, drop in your feedback in the comment section. What did you learn? What was the best part about this entire YouTube live session, so I can improvise in my next few lives? Till then, work on your craft and stay awesome, stay productive. Bye-bye.